3. Hi everyone, I'm Sanskriti Srivastava and I'm going to present a youth talk show which is named Yuva, and I have two very amazing people with me and I would like them to introduce themselves to you guys. Hi, I'm Isha and I belong from a humanities background and I'm a pass out. My name is Kashvi. I'm 18 years old and I belong to Ghaziabad. Okay, so first of all I would like to congratulate all of us कि अब हम 12th pass out कर गए हैं and it has been a very long process and ये हर कोई accept करेगा. तो सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि कैसा था वो प्रोसेस फॉर यू पर्सनली. तो एनीवन हु वुड लाइक टू शेयर फर्स्ट. ओके, सो ये प्रोसेस काफी लंबा था. लाइक सितंबर से लेकर इट्स बिन मे एंड नाउ इट्स जून एक्चुअली. तो काफी लॉन्ग बैटल थी. तो इट वाज काइंड ऑफ मिक्स ऑफ इमोशंस. एक पॉइंट पे ऐसा लगा था कि इट्स नाउ रियली फ्रस्ट्रेटिंग कि कब खत्म होगा. तो काफी हाईज एंड लोज थे. तो बट एक चीज आई वुड लव टू से कि स्टडीज हैव रियली इफेक्टेड मेंटल हेल्थ. लाइक एक पीरियड में आई वाज अ बिट ऑफ डिप्रेस्ड कि एम आई नॉट डूइंग वेल, क्या मैं इतना कर नहीं सकती हूँ. पेपर में वी ऑल नो 12th में कितना प्रेशर होता है, टीचर्स का, पेरेंट्स का. बट इट्स लाइक हिडन प्रेशर. यू रियली डोंट थिंक सो कि प्रेशर दे रहे हैं, बट प्रेशर होता है. टीचर्स हमसे एक्सपेक्ट करती हैं कि अरे ये तो मेरा बच्चा है, ये तो 95 ऑफ लाएगा ही लाएगा. एक बैक ऑफ द माइंड में उस स्टूडेंट के, उस बच्चे के चला ही जाता है कि ओ माय गॉड, मुझे 95 पे लाना ही लाना है, वरना सबकी एक्सपेक्टेशंस पे नहीं उतरा. तो एक बैक ऑफ द माइंड पे वो मेरे भी था कि कुछ टीचर्स मुझसे काफी कुछ एक्सपेक्ट करते थे. तो इट वाज लाइक कि प्रेशर था. सेकेंड आई वुड से कि जैसे एक टाइम पे बहुत डर लगने लगा था कि ये सिलेबस जो है, ये जो पढ़ना लिखना हो रहा है, मैं इससे कॉलेज जा पाऊंगी क्या? मैं कॉलेज कंप्लीट हो गए. टोटली आई एग्री. वो कॉलेज वाला फेज, अब जब एग्जाम्स दे दिए हैं तो मुझे लगता है कि कॉलेज में एडमिशन होगा. तो अभी भी मैं टोटली फ्री नहीं हुई हूँ. वो अभी 2 ये महीने बहुत स्ट्रेसफुल रहेंगे मेरे लिए कि कॉलेज का एडमिशन. तो ये अकेली नहीं हूं मैं. अब आप जस्ट टेक फॉर एग्जांपल द पीसीबी वन, जो पीसीबी और पीसीएम वाले हैं, किसी का अभी तक जेई में नहीं हुआ. नीट के पेपर्स जो इस बार आया है, उन लोगों को बहुत बहुत टफ लगा. और जो फर्स्ट टाइमर्स थे, उन लोगों ने बोला कि पेपर तो बिल्कुल अच्छा ही नहीं गया, रैंक तो आएगी ही नहीं, एडमिशन कैसे होगा. और अभी आई हर्ड कि इस बार बिट्स पिलानी में था या जेई में, वन मोर स्टूडेंट कमिटेड सुसाइड. तो इट्स लाइक सुसाइडल टेंडेंसीज भी बहुत बढ़ रही हैं. That can be quite triggering, to be honest. Exactly. Pressure is triggering so much that we are not having any option in it. First of all, we don't have anyone to guide us. हम Exactly. लोग किसी पे डिपेंड नहीं हो पाते, हम लोग फीलिंग्स शेयर नहीं कर पाते. देयर इज नो वन की जिससे देयर इज समवन क्लोज कि काश मैं अपने मन की बात बता पाऊं, क्या वो मुझे समझेगा. सो दैट इज द थिंग. I get it. What about you, Aisha? For me, again, roller coaster of emotions. कभी बहुत ज्यादा highs थे, कभी बहुत बहुत ज्यादा lows थे. So, focusing on the lows actually, because highs पे तो सभी सुख में they're with you, but dukh में there's nobody with you, honestly. So, just like Kashmi said, I would say that there was a lot of self-doubt. Again, Kashi pointed out कि क्या मैं कर पाऊंगी. And mostly, I'm blessed to have parents who do not pressurize me at all, but at the same time, there were many teachers. So I was reaching out to them, ki, ma'am, please just tell me the answer of this question, so and so. So they were actually not really interested, first of all. And even if they were, so they were like, ki, chota chota answer bata diya because we were no longer their responsibility. And the next moment they're like, ki, mera bacha 100 hi leke aayega. And
में like अगर आप 100 वाला प्रिपरेशन कराओगे तो it might be possible, but again it is not right now कि आप ऐसे ही हमसे expect करो. So there was some communication gap between the teachers and us, and I would also like to point out that teachers degree लेने से नहीं बनते, so they should be trained for that. And the other experience I would talk about is that yes, it requires you people around you, social support, emotional support जो आपको दे पाए to cope up with the emotions. क्योंकि अगर आप नहीं cope up कर पा रहे, there is a lot of evaluation stress, academic stress, pressure. उसकी वजह से people are committing suicides. And the sad part is that the youth is committing suicide, जो अभी आने वाला future है. So it is an alarming situation, but still people are not really putting in, highlighting it or putting stress on it. So overall, it was a good experience because I got to know कि मेरे क्या capacities हैं, कितना मैं stress झेल सकती हूँ actually. So, but yeah, it was a nice experience altogether. देखो, मेरा एक तो मानना ये है कि द फर्स्ट रीजन आई वुड एट्रीब्यूट टू ऑल दिस हैपनिंग इज बिकॉज हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है बहुत बहुत बुरी तरीके से रोट लर्निंग पे बेस्ड हो गई है. एंड बच्चों में ये डाला ही जा रहा है कि यही 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 लिख के आना है, बुक से आप हटके नहीं लिखेंगे, आप अपना प्रैक्टिकल नॉलेज लगा के नहीं लिखेंगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे तो आपकी कहीं कॉलेज में एडमिशन्स नहीं होंगे, या पास नहीं होंगे, आप फेल हो जाएंगे, एग्जामिनर ऐसे ऐसे आंसर्स नहीं देखेगा, या वट एवर द टीचर्स टेल यू टू डू दैट. एंड बच्चे वही करते हैं. उस प्रेशर में आके वो सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है कि इवन इफ उस बच्चे को वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आता है, लेकिन तब भी वो बच्चा उस चीज को रटने में लग जाता है कि करना ही है वरना तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स नहीं मिलेंगे तो ये हो जाएगा, फेल हो जाऊंगी, मम्मी पापा क्या कहेंगे, सोसाइटी क्या कहेगी, सारे रिश्तेदार सबसे पहले आते हैं रिजल्ट्स निकलने पे. दैट्स व्हाट हैपेंस, लाइक हो ऐसा हो गया, ये हो गया. एंड दैट्स व्हाई वो सेल्फ डाउट बच्चे को खा जाता है. एंड उनके पास लाइक बोथ ऑफ यू सेड कि कोई होता नहीं एक्सेप्ट फॉर योर फ्रेंड्स. ठीक है, फ्रेंड्स होते हैं इमोशनल सपोर्ट देने के लिए, बट आपको तब भी वो सपोर्ट आपके पेरेंट्स है या द पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू यू, वो सपोर्ट आपको उस बंदे से चाहिए कि मैं सब शेयर कर सकूं. एंड जब वो आप शेयर नहीं कर पाते हैं, वो बॉटल अप होता रहता है तो दैट कैन लीड टू अ वेरी ड्रास्टिक कॉन्सिक्वेंस. एंड अभी जैसे हम क्योंकि पास आउट हो गए हैं एंड नाउ वी आर सर्चिंग फॉर कॉलेजेस एंड अप्लाइंग फॉर कॉलेजेस, तो जब वो टाइम पीरियड भी, वो एग्जाम देने के बाद जब तक आपको कॉलेज में हो नहीं जाता है, वो एक अलग अमाउंट ऑफ स्ट्रेस होता है क्योंकि आपको लगता है नहीं मिला तो क्या होगा, नहीं मिला, ड्रीम कॉलेज नहीं मिला तो क्या होगा, सारी इज्जत का फालूदा हो जाएगा एंड ऑल दैट. तो जब उस कॉलेज में नहीं होता है ना, तो वो डिसअपॉइंटमेंट बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है. एंड इसलिए बहुत सारे बच्चे सुसाइड करते हैं. एंड दैट्स वेरी सैडनिंग, वेरी अपसेटिंग टू बी ऑनेस्ट. तो इसलिए And I would also like to add up that boards ka, if we see the the date sheet, so for humanities students it has always been a blunder. Like हमारे लिए तो disadvantage ही था because personally Sanskriti and me, we gave 3 board examinations within a span of like just 4 days. So it was a lot for us to digest, to take in, and to just feed in our minds, because rote learning is the key for everything agar marks chahiye to. And the people, they have always judge you ki kitne marks aaye hain, so that's also a problem. And then now CUET has been introduced, the common university exam test, so it has been a problem for us now, क्योंकि boards में अच्छे लाए but still they don't work out for you. You have to score in CUET, and हमारे पास इतने resources अभी है नहीं available, like mock test, and especially for the humanities subjects like sociology or home science. So like we don't know, we don't have the guidance. Even if we have the will to do something, like we have to crack this, we have to ace this, I want Miranda College, I want Hindu College, I want St. Stephen's, but like how
how I have to walk on that path. We don't know it actually right now. The teachers are not helpful right now because it is the first time that the first batch was an experiment, but we Hmm. are the ones who will actually give the result if it is fail or pass. So I guess CVT has been an advantage somewhere, but for like mota mota dekha jaye to it is a disadvantage. It is a disadvantage for us right now. Right, like it's like a boon and a bane because जिन बच्चों के boards में नहीं आ पाए and first all the college examinations used to be merit based, तो उसके लिए उन बच्चों के लिए it's a boon कि they're getting a second chance, but most of the students it's more pressurizing for them because हमें वो कोर्स भी पढ़ना पड़ रहा है that already has been deleted and वो पढ़ाने के लिए हमारे पास कोई नहीं था. So we had to do all of it again and again in 1 month, puras almost like 3-4 subjects together and whatever was additional. So that was a lot stressful and a tiring process. And I would like to Right. say, you know what, उस period पे मेरी appetite was like nil. मेरे को भूख ही नहीं लगती थी. एक तरह से मम्मा कह रही है कि कुछ खा लो, एक तरह से पापा डांट रहे हैं कि कुछ खा लो, बट इतना प्रेशर था, मन नहीं था. एग्जैक्टली पता है, मुझे डिस्क्राइब करना भी नहीं आता कि वो पीरियड क्या था. नींद नींद नहीं. आई वाज स्लीपलेस. नींद आती थी बट नींद नहीं आती थी. नींद बल्कि क्यों नहीं आती थी, क्योंकि कोर्स रह जाएगा. शिट, ये कोर्स हो गया, खत्म हो गया, तो फिर दिन तो सिर्फ 2 ही बचे हैं, करना इतना सारा है, कैसे होगा, कैसे होगा भाई, कैसे होगा. तो उस टाइम पे भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना. आई यूज्ड टू सफर फ्रॉम लाइक कांस्टेंट स्टमक एक, कांस्टेंट हेडेक. तो उस वो पीरियड वाज रियली स्ट्रेसफul फॉर मी. और आई बहुत थिंक एग्जैक्टली, टोटली एग्री विद इट. और So, संस्कृत ने जैसा कहा था कि रोट लर्निंग पे आजकल फोकस ज्यादा कर रहे हैं. सिर्फ 12th का ही नहीं, आई हैव अ यंगर सिबलिंग एंड अभी शी इज इन 6th ग्रेड. और उसको भी यही कहा जाता है कि ये बुक में इतना है, यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू राइट दिस. सो कैन यू गाइस इमेजिन कि 6th क्लास ऑनवर्ड्स दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन दैट. तो बच्चा आते 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 वो तो सिर्फ जैसे बोलते हैं रट्टू तोता, बस एक वो टैग मिल जाएगा सिर्फ. एंड दे आर सो मच डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजी कि अपना ब्रेन यूज नहीं करना चाहते. सो इट्स लाइक वेस्ट वो वेस्ट. जो अनलिमिटेड एक्सेस है इंटरनेट का, तो बच्चे सिर्फ पढ़ाई की चीजें नहीं देख रहे हैं जो उन्हें होमवर्क कॉपी करना है, एक सर्च में चैट जीपीटी देखा हो गया, but they're also taking the wrong path. They have so much access to internet. They are being, what do you say, Diverse. exposed to so many things कि they are just seeing the wrong things which the student at this age, they know things that we didn't know at their age. Agree with you. And the parents are not even keeping a check on their children, because they think कि हाँ बच्चा like उसने अगर फोन खरीदा है तो that is because of उसे online classes attend करने, because right now even if we see, so even for CVT there were many coachings which were happening online, so उसके लिए करना है, but the child is not using the phone for educational purposes but for leisure and fun, and they are watching things which they shouldn't, 18 plus stuff, and they try to imitate it. So if we go in that direction, it has been a bane. Like, we shouldn't have access to so much of technology. And I would also like to add, like, competition इतना ज़्यादा अब increase हो गया है हमारे लिए भी, if we see, and that is not only because of that हम सब compete करें, even you, me, and Kash, we are competitors at this time. But Right. if we also see that we're competing with those who are like senior to us, because wo bhi de pa rahe CVT, and even the NRIs are giving CVT. So like we have so many people to compete, and how can we handle this much pressure? Nobody is getting that कि कितना difficult हो गया हमारे लिए, because पहले तो it was like कि हाँ ठीक है तुम्हारे marks आ गए,
you got 95%, तुम्हें आराम से जो तुम्हारा कॉलेज मन होगा मिलेगा. But now it is just so difficult to reach over there. Yeah, exactly. 95 लाके भी कुछ नहीं करा. It's just that theory कि कुछ नहीं है. पेरेंट्स को लगता है कि अब तो तुम्हें एक एक्स्ट्रा चांस मिला है भाई, अब तो तुम क्रैक करके दिखाओ. एक्स्ट्रा चांस, हाँ. लाइफ हैव गिवन यू एन एक्स्ट्रा अब चांस. तुम जाएगा ड्यू में, अब तुम बोर्ड्स में ले आए तो सीयूईटी में लाने में लाने में क्या Exactly, है? क्या ही दिक्कत है, एंड एमसीक्यू ही तो है, बट दे डोंट सी इट कि भाई माइनस मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग भी है. सो हमने मेहनत करी, एक गलत हो गया, हमारा मेहनत का एक नंबर कट गया. और वो सो एक इट नंबर पे टेक्स दूसरे बच्चे को सीट भी मिल जाएगी. Exactly. It takes us one step, like back from our target. So it hurts. And I would also like to point out कि कैसे शर्मा जी के लड़के के marks देखो and all that. Like, the comparison. exactly. Like at this point, the parents really should stop comparing, because their children, they have their own potential, and they should let them excel in their field freely. And ये नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही बनेगा. अरे हाउ इज इट पॉसिबल? कैसे? माइंड सेम थोड़ी होता है. एवरीबडी इज नॉट कट फ्रॉम द सेम क्लोथ. सो they should just stop over scrapping the bottom of the barrel, like at this point, in search of the gold. They should just let it be. And children ko, they should just support their children more, rather than just उनको प्रेशराइज करने के and paving a way for them कि तुम्हें इसी पे चलना है. So the emotional support is everything that a child needs from exactly. any. पढ़ाई वो कर लेगा, उसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो बच्चा कर लेगा, उससे सिर्फ सपोर्ट चाहिए. नो कंपैरिजन, नो नेगेटिविटी, नथिंग. जस्ट योर सपोर्ट कि हाँ बेटा तुम कर लोगे, मैं हूँ तुम्हारे पीछे. दैट्स द थिंग. Yeah. And moreover, like, I have an elder sibling. So after the boards mark, I was like constantly being compared, not from my parents, thankfully, but like this the neighborhood ki, oh uske to 97.4 आए थे, तुम तो 96.8 पे रुक गए, तो where are those 3-4 marks? तुम्हें तो अपनी बहन से ज्यादा लाने थे. I'm like, sisters के बीच में why you just putting in competition? Like, you're not just making us compete, but you're also like bridging the gaps. नहीं हो पा रहा, like आप और हमें गैप फील करा रहे हो एक दूसरे के बिटवीन, एंड हमें compete क्यों करा रहे हो? Like, this is not done. So they do And not. there is time difference, जो बड़े भाई बहन है, I have an elder sibling too, and he is 4 years elder than me, and there of course there is a difference in the type of education he received and the type of education I am receiving. So of course there's going to be a difference, and the comparison is just not it. Exactly. And somewhere I even read that the NCRB reports in 2020, like a student took their life every 42 minutes. So, and more than 34 students, they died by suicide in India in every minute. So it is a very catastrophic event if we see, but people are not looking forward to it. वो अभी बस आपको प्रेशराइज करें कि नहीं आपको ये करना ही करना है. They're not seeing the क्या इसकी consequences हो सकते हैं if the child is not able to succeed. आप perfectionist बनना सिखा देते हो, आप ये नहीं सिखाते. आप उनको सिखा देते हो कि कैसे आपको साइंस करना है, मैथ्स करना है, आप उनको रिजेक्शन फेस करना ही नहीं सिखाते. So how do you expect कि बच्चा cope up कर पाएगा? And then if a child dies by suicide, they're like कि अच्छी बात है, वो तो अपने माँ बाप के लिए कुछ कर ही ना पाता, फाइनेंशियली स्टेबल ही ना हो पाता. Exactly, 70% लाया था, क्या ही हो जाता. So like, hypocrisy is at its peak right now, and we need to just bring it down, and ऐसे लोगों को ठिकाने लगाना चाहिए by the parents should actually support their children more. Exactly. And you know what, mental health जो हमारी effect हो रही है of the youth, if I would say in a broader image, in a broader light, if I would take the issue of mental health and suicides, there is not just one reason behind it, there are many. ठीक है? Even if like
a simple reason as their identity. ठीक है, लोग, ये जो यूथ होता है ना, ये जो टीनेज होते हैं, यंग एडल्ट्स होते हैं, दे सफर फ्रॉम आइडेंटिटी क्राइसिस एंड ऑल दैट. एंड यू नो, and since like actually I would like to bring this topic into light because it's Pride month, and you know, it's a month dedicated to the LGBTQ plus community, and they suffer from so much anxiety, depression, like times higher than we do actually, because of the support they don't get, of the, you know, humiliation they receive publicly, and you know, the hostility from everyone. So it's like कि इतने सारे issues है जो एक साथ मिलके बहुत, you know, आपकी हेल्थ को, चाहे फिजिकल हो चाहे मेंटल हो स्पिरिचुअल, दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, एंड वो हैम्पर होती है. तो यू नो, जो LGBTQ community है, you know, they have many reasons to receive this just because who they are and who they prefer. And you know, it shouldn't be a problem to anyone because it's their preference, their personal choice कि उन्हें क्या चाहिए, क्या, you know, who they like, who they don't like. So you know, it shouldn't be anyone else's problem because it's not affecting anyone, you know. तो इसलिए I would really like कि people, you know, would accept this, कि homosexuality is not bad, it's not a taboo, Yeah, it's not abnormal or something like that. It's exact. normal. If a guy can like a girl or a girl can like a guy, it is also possible, and it is very normal that a guy likes a guy and a girl likes a girl. I don't know इतना हवा क्यों create करके रखा है. And I would also like to point out that I was in class fourth, and my friend, he came out at that time as gay, which is LGBTQ, the second abbreviation that we use for. So everybody used to tease him like chakka hai and che and stuff like that, to look cool apparently, and they didn't even know the, you know, the meaning of it at that time, and just like imitating them and their body gestures. So at that age it is a lot to take in, and as we are psychology students, we know that how much of the childhood, you know, the trauma that you face in the childhood can like result in abnormal functioning in the future. So the teachers, they should play a role, and they should educate the children about it from the starting. Even the parents, it should not be a, you know, the case that people are just blocking their relatives on the Instagram or any other social media, and then showing their identity, then coming out as LGBTQ, any of them. So I guess we should look into this matter as also. It is as important as looking into the pressurize nahi karna, academic pressure nahi dalna. So this is something which we should just, you know, like we should come across, and we should all be together in this and find a solution for it. Even the government, it can like same sex marriages ka abhi tak pass nahi ho pa raha bill. So Literally. they should, yeah. So the youth, as youth, we hold a lot of power, and we can help in it. Petition sign karke, and social media is such a key right now. We can use it as well. So there are not many solutions, but भाई ये कि सबको साथ आना पड़ेगा, because in unity there lies power. Exactly, Isha. I totally agree with you. इसके साथ it's like कि पता है हम लोग शिप करते हैं कि oh that couple looks really good. So why can't we ship a female likes a female, a male likes a male? You know, उन लोगों के पास स्पेस नहीं है जो एक पर्टिकुलर वर्ड है. They can't hold their hands in public. They can spend together. अगर it's not just about the LGBTQ. अगर if there are two female friends or two male friends, and they're you know, sitting together, they're laughing, giggling, and having all the fun, the society point out करेगी. आप देख रहे हो वो चिपक के बात कर रहे हैं, ये पक्का गे होगा, ये पक्का लेस्बियन होगी, कुछ तो गड़बड़ है. And even their relatives, कि इनके माँ बाप को तो बताना पड़ेगा कि क्या हो रहा है. And it's just not limited to this.
सब यही होता है सोसाइटी में. सब these are pointing, nobody seeing the children but they're pointing towards other children. वो सबको दूसरे की लाइफ में they're pointing कि ये हो रहा है, वो हो रहा है. So everyone is interested in these talks, but ये नहीं दिखता कि how much toxic it is. आप दूसरे की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो. There's a fine line, and people are crossing over it. The personal space and that privacy and stuff that is your and nobody else's. So I think कि लोग भूलते जा रहे हैं कि, but अगर हम recent केस ले कि privacy का, तो you all know कि there was a murder of Sakshi, and that boy was yeah. तो तब no one invaded the privacy. तब किसी ने कुछ एक्शन नहीं लिया. Everyone was watching, everyone was still. हम क्या करेंगे जब कुछ गलत काम होता है? Exactly. जब कुछ गलत काम होता है तब तो बोलना नहीं है, but जब कुछ और हो रहा होगा, then we really have to speak up. So that was huge shocker for me, and I really pray कि किसी के साथ ना हो ऐसा. And I was totally shaken जब मैंने ये सुना, कि मुझे खुद लगता है कि अब कॉलेज होगा and we all will be going. So somewhere I don't feel safe. कि whom should I trust? Trust issues है. I really can't trust. Not I. Neither of us can trust anybody. So there's also, this thing is going on for society. Girls, even boys are not safe. You really don't even know कि कब क्या हो जाए. So it was just कि society is like मेल के भी, जो मेल्स है उनके भी सेक्सुअल हरासमेंट होते हैं, बट नो वन इज रेडी टू टॉक अबाउट दैट बिकॉज दे थिंक अरे ये तो मर्द है, ये इसको कैसे कर दिया, ये तुम तो लड़के थे ना, तो तुम्हारे साथ कैसे हो गया, तुम अपने आप को बचा नहीं पाए, अरे लड़की है क्या. एंड इट्स लाइक all these things they are used as an insult rather than being talked about in a कि हाँ इसके लिए कुछ करना है, but they have to talk negatively about it कि ओ ऐसा हो कैसे गया, and victim blaming कि तुम्हारी ही गलती थी. So that's how it works ना. People like using derogatory terms and लगता है they'll be महान बन के आ जाएंगे and prove themselves as the one who are right. And as Kashvi pointed out that privacy invade कर रहे हैं, and when people are showing acts of intimacy in public which are ethical, like they are not something you should रोकना चाहिए. Then we are like कि नहीं, इस लड़के ने इस लड़की को कैसे हाथ लगाया and stuff. But वहीं पे जब कोई किल कर रहा है किसी को, तो वी आर लाइक हाँ ठीक है यार, ये तो होता रहता है, एक और निर्भया आ गई, something like that. We should also be taught from the start that hugging one another if by consent, and also that if the other person is comfortable with it, or just shaking hands or doing anything we want, if it is fine with both of them, then it is like कि हमें इसमें नहीं पढ़ना चाहिए. But वहीं पे अगर किसी को कोई भी बैक टच कर रहा है, तो we should be the one who should interfere, and then राइट को सही बताना एंड रॉन्ग को गलत बताना. बिकॉज हमेशा ऑलमोस्ट उल्टा होता है कि लड़की ने छोटे कपड़े पहने थे तो इसकी वजह से ये चीज हो गई. So I guess we should also focus on this, and our immediate environment, our parents, our school teachers, our friends, they play a very important role in this. So each one of us should be sensitive because society हमसे ही तो बनती है. So I guess the future is going to be somewhat brighter because us as youth, we are very much sensible than what the previous generations were. We are more educated. So fingers crossed, I hope there will be a better future for each one of us. And koi bhi aise, we won't hear these rape cases. Like we can just imagine and manifest a society like that, I guess. Because people over here, जिसे मौका मिलता है वो दूसरे को just let down करना ही चाहेगा. तो empathy शुरू से सबको सिखानी चाहिए. एग्जैक्टली, लाइक द राइट थिंग्स शुड बी एजुकेटेड ना, क्योंकि बच्चों के दिमाग में हमेशा ये इंस्टिल किया जाता है कि ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है.
they're not teaching कि what is right, and जो चीजें सही भी है उनको भी गलत बोल दिया जाता है, because this is like generational. So वो generational trauma, that generational teachings, वो हटानी है, वो break करनी है. And I hope कि we, since we are the the woke citizens of a society, हम तो step ले ही रहे हैं, but जो आगे की generations है उनको भी they have to wake up. It's high time. And ये जो अब जितनी टेक्नोलॉजी आ गई है उससे उससे भी बाहर आके यू हैव टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ. ये जो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है, दैट वोंट टेक अ स्टेप फॉर यू. ठीक है, यू हैव टू टेक अ स्टेप फॉर योर सेल्फ. दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से. और इसकी शुरुआत एक्चुअली घर से ही होनी चाहिए. लाइक भाई है, बहन है, उसी टाइम यू हैव टू टेल देम, इवन व्हेन दे आर सब कुछ गलत हुआ किसी के साथ, यू रियली हैव टू सेट दैट टाइम कि ये सही है, ये गलत है. दैट इज द बिगिनिंग. अगर आपने घर पे सही करा तो पॉसिबल नहीं है कि वो बच्चा ये वो बच्ची बाहर जाके वो गलत देख मतलब देखी और कुछ बोले ना. दे विल फॉर श्योर टेक एक्शन. Exactly. Yeah. And फैमिली मेंबर्स में भी अगर कोई बोलता है, कुछ गलत कह रहा है, तो पॉइंट इट आउट, नो मैटर वो कितना बड़ा है. ठीक है, डू इट पोलाइटली, लेकिन ये है कि करना है, बताना है कि नहीं आपने ऐसा, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था. बी सेंसिटिव. True. And I would also like to add on that the punishment or the pointing out, it should be a gentle one. मतलब ये नहीं कि you are just like hitting your child. वो और aggressive हो जाएगा उस वजह से, and point तो वो समझ ही नहीं पाएगा. In fact वो maybe और उससे आगे ना करे, तो उसके consequences ज्यादा होंगे rather than advantages. So I think at this point the family psychologist would help a lot. So there should be a lot of awareness about psychology. सिर्फ पागलों का डॉक्टर नहीं समझना चाहिए उन्हें. एंड लाइक मेंटल डिसऑर्डर्स, उन्हें एक टैबू, एक स्टिग्मा नहीं अटैच होना चाहिए कि ये तो पागल है, इससे दूर रहो, ये तुम्हें भी पागल कर देगा, एज इफ दे आर कम्युनिकेबल. सो they should be treated as any other physical disorders that we know about. एक्चुअली आई अग्री सच में, बिकॉज आपकी फिजिकल हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ से जुड़ी है, एंड दोनों में से कोई भी हैम्पर होती है तो इट टेक्स अ टोल ऑन योर होल बॉडी. ठीक है, सो actually so we don't have much time left, so I would have to end this. But seriously, the thing is ki we need to take this topic and spread awareness a lot. This was just a small step, but everyone needs to take a step for this. And maybe वैसे तो it will take a lot of time for the society to progress actually में, because वो mentality नहीं जाती है. even if you look at in our surroundings, जो हमारे खुद के friends हैं उनकी mentality हर किसी की different होती है, and that's because of the family, because of the bringing up, whatever the upbringing that they're getting. So with that I would like to conclude this meeting. And I would like to thank you too, Kashvi, Esha, मेरे को join करने के लिए, and actually speaking so much about this, spreading so much information. And I really hope कि इससे even अगर दो लोगों की mentality इस चीज से change होती है ना, I would consider कि it's a big change. It's a big change. Exactly. Yeah. Anything on a concluding note from you? I'd like to thank you guys because I got to learn about some stuff I didn't know about, and also that we are friends and we're not talking only about कि क्या life में चल रहा है and gossiping, but also talking about those issues and things which usually people do not talk about. So I can definitely consider you as my safe place, and I'm glad that we are getting mature day by day and because of our surroundings. Thank you, Isha and Sanskriti. I think मेरे लिए ये प्लेटफॉर्म था कि जहाँ I could open up and I could bring some issues into the highlight of people and to even us कि मन में क्या था, क्या इमोशंस होते हैं, क्या प्रॉब्लम्स हम लोग फेस करते हैं जो हम शायद किसी के साथ बात ना कर पाए, बट एज फ्रेंड्स हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाए. So it was a lot of emotions for me, and I would really thank for this opportunity, Sanskriti. Thank you so much. Thank you. Thank you. Okay.
Okay. let's end this. Yeah. So, bye, Okay. good night. Bye.